Hello everyone, welcome back to my channel Sonali's Memoir. Today our topic is fracture. So let us find how to solve fracture problems. So in fractures, as you can see, there are two methods, knockout method and league method. And let me tell you one more thing, fracture runs on odd and even numbers. Okay, so there are odd number of teams or else even number of teams. For odd number of teams, buy is compulsory. We have to give buy compulsory. And for even number of team, buy depends conditionally. We may have to give a buy or else we don't need to give a buy. In league method, there are three types by which you can draw fixtures: cyclic method, tabular method and staircase method. This also follows the same odd and even number of teams. Okay, so now what is buy? Buy is a special privilege offered to a team in the initial round of game. Means the team who gets buy in the first round is directly promoted to the second round without playing the first round. Okay, it's an advantage to the team given. Now let us see knockout tournament. Note that what I told you prior, knockout tournament runs on odd and even basis differently, means formulas are different even though the steps are same. Okay, so let us see now one fixtures for even number of teams. Okay, whereby we need to give a buy. Okay, I told you prior, for even number buy is conditional. So we'll see two examples of even number whereby we have to give and buy where buy is not required. Okay, so let us find now one even number example. So first step you have to do is number of team in upper half, number of team in lower half, number of buys, how many buys you are gonna give, and number of rounds. Now see, suppose we take even number 6, number of teams are there 6. Okay, so how many teams would be there in upper half? There would be 6 divided by 2, means n divided by 2 is equals to 3. So 3 teams would be there in upper half. Number of teams in lower half, n by 2, same formula, 6 by 2 is equals to 3. So 3 teams would be there in upper half and 3 in lower half. Number of buy, it's power of 2 minus n, means number of team. So how to remove power of 2? Now let us come towards power of 2, how to give it. Okay, now as you can see over here, power of 2, power of 1 is 2, 2, 4, 3, 8 and 4, 16. It's like 2 multiplied 4 times we get 16s, right? 2 multiplied 3 times we get 8, 2 multiplied twice we get 4. So now what is our team number of team? There are 6 teams, right? 6 lies between 4 and 8. Yes or no? Yeah. So which power we should take, 4 or 8? Obviously in maths we doesn't go behind, we don't take a step behind, so we have to take the forward power. So which power we are going to take? We are going to take power of 3, means 8. So over here, as if I have written, power of 3 minus 6 is equals to 8 minus 6 is equals to 2. So how many buys you have to give in this slots? 2 buys you have to give. Number of round, it has been denoted by small n, means power. What is our power? It's 3, right? So you have to write 3. So number of rounds would be 3. Let us move forward. Okay, so coming forward to our buy session, as if I told you buys are required. Now there is a rule for buy, how you have to give buy. It's first buy is given to lower half last team, second buy is given to upper half first team, third buy is given to lower half first team, and the last one, fourth buy is given to upper half last team. Got it everyone? Okay, now let us draw a fixture of it. Okay, now as we have solved the problem, this problem which I was talking about, right? So we have to draw a fixture of it as well, right? So let us draw the fixture. So how you have to solve the fixture? Let us solve it now. So how many buys we have to give? 2 buys, right? So see, first we have to write the teams. How many teams are there total? Team, round 1, round 2, round 3. Okay,
So now upper half, how many teams were there in upper half? 3. So 1, 2, 3. After that you have to draw a line in between. That line is known as half line, which divides the team into upper half and lower half portion. Okay, so first bye was given as per the rule to the last number of lower half team. Means who will get the first bye? It's 6 number. Second bye was given to the upper half first team. Got it? Okay, so now let us find how many matches are there in first round. So there would be match between 2 and 3, 4 and 5. Suppose now between 2 and 3, 2 won it, and over here 4 win the match. Now let us move forward to round 2. Now it would be, the competition would be between bye, means team 1 and team 2, over here as well 4 and team 6. Suppose here 1 wins and 6 wins. Okay, so the last round, means round 3, would take place between 1 and 6. Suppose 1 is the winner and the fixture has been sorted out. Till here clear, everyone? Let us move forward to another example where you can see that we don't require bye. Okay, so again even number. First example which we saw, it was also even number, but where bye was required. Now this is such kind of example where bye is not required. Now number of team, as usual, n is equals to 8. Suppose we take an example of 8 number of teams. Number of team in upper half, n by 2, means 8 by 2 is equals to 4. Number of team in lower half, n by 2 is equals to 8 by 2 is equals to 4. Number of byes, power of 2 minus n is equals to, which power are we going to give? Now see, over here few of them get confused, right? Don't get confused at all. Why? Because which power you all are supposed to give is, okay, I'll let you know. Now see, over here itself you can see 8, right? So you don't have to take any other power. You just have to consider the same power, means power of 3. So which power you are gonna give? It's power of 3. Okay, hold on. Power of 3. So that means 8 minus 8 is equals to 0. So how many byes you have to give? You don't have to give any bye to any team, right? Bye is not required. How many rounds are gonna be played? N power means what is our power? It's 3. So 3 rounds would be played. Now let us find the fixture. Now team, round 1, round 2, round 3. We have written the teams. How many teams are there in upper half? 4. So 1, 2, 3, 4. After 4, the half line would be drawn. Once the half line is drawn, write upper half, lower half team. Fixture the rounds, like first competition would be amongst first and second team, third and fourth team, fifth and sixth team, and seventh and eighth team. Okay, round 1 is clear. Amongst first and second, suppose second team wins, and over here fourth team wins 6th and 8th. So the second round would be played amongst second and fourth team, and over here 6th and 8th team. Over here as well in second round, 4th and 6th team wins the match. So the last final round would be played amongst 4th and 6th team. So 4th and 6th team would be competing against each other, where suppose 4th team wins the match and we are sorted with the fixture as well. Okay, so we are done of knockout tournament even number, where we have seen an example where bye was essential to give, and one more example where bye is not required. Now let us see the example of knockout tournament for odd team. Okay, so as if I told you prior, method is same but formulas are different, steps are different. Now let us see. Number of teams as it's same. Number of teams in upper half, over there it was n by 2 in even number, but here in odd number it is n plus 1 by 2. Number of teams in lower half, n minus 1 by 2. Number of byes, power of 2 minus n. Number of rounds, n. And 2 more steps are been added, which are number of byes in upper half, how many byes you are going to give in upper half, and number of byes in lower half. Okay, so the formulas are written in front itself. So let us take any odd number
to solve the problem. Let us take 11. Okay, so 11 plus 1 divided by 2 is equals to 12 by 2 is equals to 6. So how many number of teams would be there in upper half? There would be 6 teams. Number of teams in lower half, 11 minus 1 divided by 2 is equals to 10 by 2 is equals to 5. So 5 number of team would be there in lower half. Now let us move forward to number of buys. So which power would be given over here? Obviously power of 4. Why? Because 11 lies between power of 3 and 4. So we'll give the next power, that is 16. Okay, so 16 minus 11 is equals to 5. Number of rounds, n is equals to, what is the power? It's 4. So 4 rounds would be there. Okay, number of buys in upper half, mean buy minus 1 divided by 2 is equals to, how many buys were there? There were 5 buys. So 5 minus 1 divided by 2 is equals to 4 by 2 is equals to 2. So in upper half we have to give 2 buys. Let us move forward to lower half. B plus 1 divided by 2. Over here it was B minus 1 in upper half. In lower half it's B plus 1, means buy plus 1 divided by 2 is equals to 5 plus 1 divided by 2 is equals to 6 by 2 is equals to 3. So in lower half we have to give 3 buys, and in upper half we have to give 2 buys. Now let us draw fixtures. Team 1 to 11, you have to write it down. Round 1, round 2, round 3 and round 4. So how many buys were essential to give? There were 5 buys. We were required to give 5 buys. As we can see over here, number of buys there, we have to give 5 buys to the team. In upper half there would be 2 buys given, and in lower half there would be 3 buys given. Now let us solve the problem. Okay, so first buy, to whom should we give? Yes, exactly, the first buy should be given to the lower half last team, that means 11 number team. Second buy should be given to the upper half first team. Third buy should be given to the lower half first team, and fourth buy should be given to the upper half last team. Now you all would be saying like, ma'am, you just showed 4 buys, right? Fifth buy to whom should we give, right? So for that purpose, what you all are supposed to do is, whenever such kind of question comes, don't get confused at all. So you have to again move forward towards your first buy, means we have to start from the starting itself. Now fourth buy has been given, fifth buy you will give to lower half last team. That means lower half last team 11 prior itself we have given, so the last would be 10. So we are going to give the fifth buy to 10th number team, right? Okay, let us draw the fixture. So first match would be amongst 2 and 3, 4, 5, over here 8 and 9. Second round, suppose now over here 3 wins the match, 5 wins the match and 9 wins the match. Now in second round, team 1 versus team 1 got the bye, right? So team 1 versus team 3, team 5 versus team 6, team 7 versus team 9, and team 10 versus team 11. See, 1 wins the match, 6 wins, 7 wins and 10 wins. Coming forward to round number 3. So over here we have to compete against 1 and 6 team. Match would be played, and 7 and 10 team, like 2 matches would be played, right? So amongst these 2 matches, suppose in first match in upper half 1 wins the match, and in lower half 10 wins the match. Coming towards our last round, means the last match, it would be amongst 1 and 10, where 1 wins the match, and we are done with the fixture. Okay, so we are done with our knockout tournament fixtures for even number as well as odd number. Now moving forward to league tournament cyclic method. We are gonna see first cyclic method. Okay, the same methods are used, but different formulas are there. Okay, so now let us see an even number. So 3 steps are there: number of team, number of matches, number of rounds. Number of teams, suppose we take again 6 number,
number of matches is n in bracket n minus 1 divided by 2. That means 6 in bracket 6 minus 1 divided by 2. Your answer would be 15. Number of rounds n minus 1 is equals to number of team minus 1. 6 minus 1 is equals to 5. Okay, so now how you have to draw the fixture? Over here the fixtures are in different format. So how many rounds were there? There are 5 rounds. So draw boxes of 5. Round 1, round 2, round 3, round 4 and round 5. How many teams are there? कितने teams है? 6 team है, right? So what you have to do is divide the team between amongst 2 groups from 1 to 3 and 4 to 6. Now start writing 1, 2, 3, 4, 5 and 6, as well as draw the arrows. Arrows are compulsion. Now first round would be played amongst 1 and 6, 5 and 2 and 4 and 3. Keep the one common, as I have kept the one common everywhere. Why? Because you will get to know that each team has compete against each other. This is league tournament. In what is league tournament? League tournaments are tournament where each and every team compete against each other. So we have to see that as well. So एक को हमें कॉमन रखना है. ओके, तो चलो फर्स्ट राउंड में हमने देख लिया. फर्स्ट 6 और फर्स्ट की मैच होगी, 5th और 2nd की मैच होगी, 4th और 3rd की मैच होगी. लेट अस मूव फॉरवर्ड टू अ सेकेंड राउंड. 1 कॉमन रखना है एज यूजुअल. यहाँ पे जो 6 नंबर था वो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड राउंड में. सो 1, 6, 2, 3, 4 and 5. So 1 will compete with 5, 6, 4 and 2, 3. Got it? Let us move to a third round. Common, we will keep 1 common. So अभी क्या आएगा यहाँ पे? 5 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, राइट? सो 5 आया. 5, 6, 2, 3 and 4. तो राउंड 3 में 4 compete करेगा 1 के साथ, 3 and 5, 2 and 6. 4th राउंड में 4 नीचे आ जाएगा 5 की जगह पे. तो 1, 4 and 5, 6, 2, 3. So first match would be played amongst 3 and 1, 2, 4 and 6 and 5. Last round, round 5th. 1 common रखा है. So 3 यहाँ पे आ जाएगा. 3, 4, 5, 6 and 2. So second की मैच फर्स्ट से होगी, 6th की मैच 3rd से होगी, 5th की मैच 4th से होगी. नाउ एज इफ यू कैन सी, अगर आपको ये देखना है कि आपने सम करेक्ट किया है या नहीं, तो फिर आप राउंड 6 भी ड्रॉ कर सकते हो. आपका राउंड 6 सेम राउंड 1 के जैसे आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यस, योर आंसर एंड योर स्टेप्स आर करेक्ट. ओके, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना. लीग टूर्नामेंट ऐसी टूर्नामेंट है जहाँ पे हर एक टीम एक दूसरे के साथ compete करती है, और इसमें जो ज़्यादा पॉइंट गेन करता है वो टीम जीत जाती है. ओके, सो वी सॉ साइक्लिक मेथड, इवन team fixture. Okay, now let us move forward to odd fixture. Now let us solve cyclic method, odd number of teams. Okay, so there would be 3 steps. Same steps would be there. Number of teams n, number of matches, number of round. So number of team, let us take an odd number 5. Okay, number of matches, it's same, n in bracket n minus 1 divided by 2 is equals to 5 in bracket 5 minus 1 divided by 2. The answer would be 10. Okay, so how many matches would be played? There would be 10 matches played. Number of round, it's n number itself, so how many rounds would be there? 5 rounds would be there. Draw the fixture. Round 1, round 2. For number of rounds, how many teams, that much rounds would be played. Okay, over here round 3, round 4, round 5. Just write in top that R1 means round 1. Okay, make sure. So now come on, let us solve. So over here in our prior example, what we saw, we took first number common, means first team common, where it was been written everywhere on the common place itself. So यहाँ पे as if यहाँ पे odd number है,
दो इक्वल टीम्स में तो वो डिवाइड होने नहीं वाला है. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज हम लोग यहाँ पे बाय को कॉमन रखते हैं. ओके, सो बाय वुड बी कॉमन. सो बाय 1 2 3 4 and 5. तो फर्स्ट हर एक टीम को बाय मिलेगा, राइट? इट्स द रूल. सो पहले 5 नंबर टीम को पहले राउंड में बाय मिलेगा. 4th नंबर विल बी कम्पीटिंग अगेंस्ट 1 3 सेकेंड के साथ करेगी. अगेन इन द सेकेंड राउंड बाय कॉमन रखना है. 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा. 1 2 3 and 4. तो 4th नंबर टीम को बाय मिल जाएगा. 3 and 5 के बीच में मैच होगी और 2 और 1 के बीच में भी मैच होगी. एरोज आपको ड्रॉ करने हैं जिससे आपकी डायरेक्शन दिखाएंगे ड्राइंग के. ओके, अभी आते हैं राउंड 3 की तरफ. बाय कॉमन रखना है. अगेन यहाँ पे 5 नंबर था, अभी 4 नीचे आ जाएगा 5 की जगह. तो 4 5 1 2 and 3. 3 को बाय मिला इस बार. 2 का 4 के साथ मैच होगा और फर्स्ट का भी 5 के साथ मैच खेला जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड टू आ 4th राउंड. कीप बाय कॉमन. यहाँ पे 4 था, 3 अभी नीचे आ जाएगा. सो 3 4 5 1 and 2. यहाँ पे भी सेकेंड को बाय मिला. अभी आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे बाय हर एक टीम को बाय मिल रहा है. 5th को मिला फर्स्ट राउंड में, बाद में 4th को बाय मिला, 3rd को बाय मिला, सेकेंड को मिला. अभी लास्ट राउंड में किसे बाय मिलेगा? इट वुड बी द फर्स्ट टीम हु इज गोना गेट बाय. तो लिखो चलो BY बाय. फर्स्ट टीम को यहाँ पे बाय मिला. ऑब्वियसली यहाँ पे 2 आएगा. 3 4 and 5. इसका मतलब है आपके फ्रिक्चर्स प्रॉपर आ गए हैं. Got it everyone? So we are clear over here of cyclic method. लीग टूर्नामेंट से साइक्लिक मेथड हमने इवन नंबर के लिए भी सॉल्व किया और ऑड नंबर के लिए भी सॉल्व किया. ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू स्टेयरकेस मेथड, सेकेंड मेथड ऑफ लीग टूर्नामेंट. ओके, let me tell you one thing, staircase method is the easiest method for fixtures. okay, so by chance अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, बाय चांस बोल रही हूँ मैं, आपके लक के ऊपर डिपेंड है. अगर क्वेश्चन आ जाए दैट this many teams are there, draw fixtures with any method. So just choose staircase method. आग बंद करके staircase method ही choose करना. Why? Because there are not so many steps and this method is very easy to solve as well, as you can see forward. So odd और even number के लिए same steps रहते हैं. इसको odd और different के लिए अलग अलग कुछ नहीं होता. Both the numbers for odd and even method is same itself. Now let us take an example. Let us take number of team 6. Okay, so we are 6 in bracket 6 minus 1 divided by 2. The answer would be 15. Okay, so how many total rounds would be? Total number of matches would be 15. Total number of rounds n minus 1, that is 6 minus 1 is equals to 5. So how many rounds would be there? 5 rounds would be there. अभी यहाँ पे आपको कैसे करना है? Obviously staircase है, मतलब सीढ़ियों जैसे ही करना है आपको. ठीक है, तो 1 को फिर से कॉमन रखना है. 1 की मैच 2 के साथ होगी, 1 की मैच 3 के साथ होगी, 1 की मैच 4, 1 5, 1 6. ओके, तो यहाँ पे हो गया 6 तक मैचेस हर 1 ने हर एक के साथ खेली. गॉट इट? चलो अभी सेकेंड यहाँ पे आ जाते हैं. तो 2 ने मैच 1 के साथ तो ऑलरेडी खेल चुका है सेकेंड नंबर का, राइट? तो अभी 3 के साथ नहीं खेली है. 2 ने 4 के साथ नहीं खेली है. 5 and 6. थर्ड नंबर, थर्ड ने 1 के साथ मैच भी खेली है और सेकेंड के भी साथ खेली है. ऐसे मत बोलना अभी थर्ड नंबर ने थर्ड के साथ नहीं खेली है. नो, खुद जो टीम है वो खुद के साथ तो नहीं खेल सकती है, राइट? सो थर्ड नंबर ने 4th के साथ मैच नहीं खेली, 5th के साथ नहीं खेली और 6th के साथ नहीं खेली. 4th नंबर फर्स्ट डन, सेकेंड, थर्ड एंड 5th ओवर ईयर 6th. ओके, 5th नंबर ने लास्ट 6 के साथ मैच नहीं खेली है, बाकी सारों के साथ मैच खेल चुकी है. अभी ये सवाल मत पूछना कि मैम अभी ये 5 तक हुआ है, 6 का कहाँ है. 6 ने हर एक के साथ मैच खेला है.
सी 6 ने 1 के साथ भी खेला है, 2 के साथ भी खेला है, 3, 4 एंड 5. ओके, सो ये कैसे है, सीढ़ियों के जैसे हमारा स्टेप्स हो गया है, राइट. तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है. सी सो सिंपल इट वॉज, राइट. सो यहाँ पे आप देख सकते हो लीग के जैसे ही हर एक टीम ने हर एक टीम के साथ compete किया है. जो भी ज़्यादा पॉइंट गेन करेगा दैट टीम विल विन द मैच. ओके, now moving forward to our last method from league tournament, that is tabular method. tabular method में भी odd और even के लिए दोनों के लिए different types है. okay, now let us see one example of even number of teams. So what are the steps? There are 3 steps: number of team, number of boxes, number of rounds. okay, so number of team चलो 6 ले लेते हैं. ओके, नंबर ऑफ बॉक्सेस इट वुड बी 6 + 1 = 7. तो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए? 7. तुरंत ड्रॉ कर लेना. कॉलम्स और रो 7 करने हैं. मीन्स लाइक सी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो आपको ऐसे बॉक्स तुरंत ड्रॉ करना है. नंबर ऑफ राउंड्स, हाउ मेनी राउंड्स वुड बी देयर? देयर वुड बी 6 - 1 = 5 राउंड्स वुड बी देयर. ओके, तो ये बॉक्स ड्रॉ कर लिया आपने. एक बीच में आपको प्रॉपर सेंटर्ड लाइन ड्रॉ करनी है, डायगोनल लाइन. ओके, वंस यू हैव ड्रॉन द डायगोनल लाइन इट वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट एज इफ यू कैन सी ओवर हियर इटसेल्फ. तो चलो टीम के लिए हम लोग नेम देते हैं A, B, C, D, E and F. Same over here as well, you have to write the same A, B, C, D, E and F. ये वाले आपको कंपार्टमेंट में कुछ भी नहीं करना है. यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग ओवर हियर. मैचेस वुड बी प्लेन दिस साइड इटसेल्फ. सो अभी चलो कितने टीम्स? 6 टीम्स है, राइट. चलो अभी मैचेस खेलते हैं. तो यहाँ पे मैचेस कैसे खेली जाती है? तो यहाँ पे लिखो टीम 1 2 3 4 एंड 5. ओके, तो लिखा ये. फर्स्ट नंबर के नीचे कुछ बॉक्स बचा है? नहीं. सेकेंड नंबर के नीचे बॉक्स है? यस. सो सेकेंड के नीचे क्या आएगा? 3. 3 के बाद 4 एंड 5. 4 के बाद 5. अभी 5 के बाद नीचे क्या लिखोगे? 2 बॉक्सेस और बचे. व्हाट आई सेड, रिवर्स. रिवर्स जाना है ऐसे. 1 2 3 4 5 है तो आपको फिर से स्टार्टिंग से आना है. मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 1 और 2 5. अभी यहाँ पे भी सेम करोगे? नो. लास्ट वाला जो बॉक्स है यहाँ पे थोड़ा डेफर करता है. यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में आपको इवन नंबर लिखना है. मतलब 1 से लेके 5 तक कौन से इवन नंबर्स है? 2 और 4. सो फर्स्ट यू आर गोइंग टू राइट 2 4 एंड आफ्टरवर्ड्स द ऑड नंबर 1 एंड 3. गॉट इट एवरीवन? तो अभी मैचेस कैसे खेले जाएंगे? आप बोल रहे होगे अभी मैचेस कैसे खेलने वाला है, राइट. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, पहला नंबर आपको जहाँ जहाँ दिख रहा है स्टार्ट राइटिंग. फर्स्ट नंबर कहाँ दिख रहा है आपको? A वर्सेस B. सो द फर्स्ट वुड बी A वर्सेस B. सेकेंड लाइन में आपको 1 दिख रहा है? नो. थर्ड लाइन में दिख रहा है? यस, आई कैन सी. C वर्सेस E. सो हियर इट वुड बी C वर्सेस E. यहाँ पे यस, D वर्सेस F. D वर्सेस F. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर सेकेंड राउंड. सेकेंड नंबर की टीम देखते हैं अभी. सो A वर्सेस C. A वर्सेस C. सेकेंड इसमें आपको दिख रहा है यस, B वर्सेस F. B वर्सेस F. यहाँ पे नहीं, D वर्सेस E. D वर्सेस E. लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर थर्ड राउंड. और अभी थर्ड नंबर देखेंगे हम A वर्सेस D. A वर्सेस D. B versus C. We all know E versus F directly. E versus F. राउंड 4 में फोर्थ नंबर को देखिए, A versus E. Over here B versus D.
थर्ड वाला भी देखते हैं यहाँ पे, C वर्सेस F, C वर्सेस F। फिफ्थ वाला नंबर देखते हैं अभी, ओके। फिफ्थ नंबर A वर्सेस F, then over here B versus E, C versus D. Now we are done with the fixture, okay, as you all can see. So ये वाला कौन सा फिक्सचर था, टैबुलर मेथड इवन नंबर। इवन नंबर के लिए हमने ये फिक्सचर ड्रॉ किया, जो इजी मेथड में ड्रॉ किया। अगर आप ऐसे स्टेप्स के साथ जाओगे आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे, आपके स्टेप्स भी गलत नहीं होंगे, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर ऑड नंबर फिक्सचर, ओके। चलो अभी ऑड नंबर के टीम्स का फिक्सचर बनाते हैं। सो सपोज ना सेम नंबर ऑफ टीम्स वुड बी देयर, नंबर ऑफ बॉक्सेस, पहले इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या था, n+1, ओवर ईयर इट वुड बी n+2। नंबर ऑफ राउंड्स सेम होगा, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स पहले इसमें क्या था, n-1, यहाँ पे बस n होगा, ओके। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक 7 नंबर, odd number, okay। number of boxes it would be 7 + 2 is equals to 9, so 9 boxes would be there। तो ड्रॉ करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बीच में आपको क्या ड्रॉ करना है, डायगोनल लाइन एज इफ सेम। नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो गए, जितने नंबर ऑफ टीम्स है उतने राउंड्स होंगे, ओके। तो चलो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं टीम्स के लिए। A B C D D E F G। लास्ट बॉक्स में अभी ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए कंपल्शन क्या है हमें, वी हैव टू गिव बाय कंपल्सरी। सो लास्ट बॉक्स वुड बी बाय बॉक्स, ओके। तो लिखना है सेम एज इट इज, यहाँ पे भी कर दो A B C D E F G and the last box would be of by। हो गया, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 and 7। 1 के नीचे तो बॉक्स नहीं है तो नहीं आएगा, 2 के नीचे 2 3 3 4 5 4 5 6 7 5 6 7 7 के बाद क्या आएगा, यस 1 and 2, 6 7 1 2 3 and 4। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, पहले आप कौन सा नंबर लोगे, ऑब्वियसली इवन नंबर तो 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, मीन्स 2 4 and 6 will come prior, after that 1 3 and 5। हो गए मैचेस लगा के। चलो अभी लिखते हैं राउंड 1 में किसके साथ मैचेस होगी, A versus B, first round will be played amongst that। Let me tell you one more thing, जो बाय है वो लास्ट के रो में लिखना कॉमनली, वाई बिकॉज आपको पता चल जाए कि हर एक टीम को बाय मिला है, ओके। सो पहले टीम में पहले इसमें वी कैन सी A versus B हुआ है, सेकेंड बॉक्स में B में वाले रो में तो नहीं है, सो यहाँ पे C versus G, C versus G, over here D versus F, D versus F, and number E will get a by। नंबर E को क्या मिलेगा, by मिलेगा। सो यहाँ पे लिखना है आपको E को क्या मिला, by। चलो राउंड 2 में जाते हैं। A versus C versus C, 2 नंबर 2 को क्या मिला है, B नंबर को क्या मिला है, by मिला है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, B को बाय। बाय कभी भी हमें नीचे लिखना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, ओके। सो बी को बाय मिला, सी के राउंड नहीं है, 2D, यस D वर्सेस G, D वर्सेस G, आफ्टर दैट E, यस E वर्सेस F, E वर्सेस F हुआ। राउंड 3 की तरफ जाते हैं। राउंड 3 इट्स A वर्सेस D, उसके बाद B वर्सेस C, after that can you see in the, no we can't, E versus G, E versus G, and the last over here F will get a by, okay। Moving forward to our fourth round।
So A versus E. Over here B versus D. C will get a bye. C will get a bye. Okay. F versus G. F versus G, as you can see. F versus G. Moving forward to our fifth round. फिफ्थ राउंड में देखते हैं अभी 5 नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे. A versus F. B versus E. C versus D. और G को क्या मिला यहाँ पे, G को बाय मिला है. सो यू विल राइट डाउन G को क्या मिला है, बाय मिला है फिफ्थ राउंड में. सिक्स्थ राउंड देखते हैं. A वर्सेस G. A वर्सेस G हुआ. B में B वर्सेस F. C वर्सेस E. एंड D will get a buy. So D को यहाँ पे क्या मिला है, D को यहाँ पे buy मिला है. So now let us move forward to our last round. चलो लास्ट राउंड देखते हैं. ओके. सो A वर्सेस, A को क्या मिला है, बाय मिला है, तो होगा वर्सेस नहीं, लिख दो A को मिला है बाय. ओके. B वर्सेस G. राइट. B वर्सेस G. C वर्सेस F. D वर्सेस E. आशा करती हूँ आप सबको फ्रिक्चर्स ड्रॉ करना इजी मेथड से आप सब लोग सीख चुके हो. दिस वाज आवर लास्ट फ्रिक्चर फॉर लीग टूर्नामेंट टैबुलर मेथड ऑफ ऑड नंबर टीम्स. ओके.